Today our topic of discussion is process synchronization. We are going to start with new topic, that is process synchronization. First thing first, just tell me what is process? Process क्या होता है? So a process is basically a sequence of information that executes, and process exists in a limited span of time. So two or more processes could be executed the same program, each using their own data and resources. एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसमें हो सकता है एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए. दे मे शेयर मेमोरी, दे मे शेयर रिसोर्सेज, दे मे शेयर टाइम और इंफॉर्मेशन. ठीक है. So they compete, they work together in collaboration and perform a particular task. So this is all about a process. So process is what it is, a sequence of information that executes. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आप गाइड करते हो कि हाँ पहले आप ये स्टेप करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. So that particular sequence of information will be termed as your process. Next is process synchronization. So what do you mean by process synchronization? कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हो सकता है कि हमें मल्टीपल प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़े, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़े. हो सकता है वो प्रोसेसेस सेम रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, सेम मेमोरी डेटा शेयर कर रहे हैं, और दे में compete फॉर CPUs. सो उस सिनेरियो में प्रोसेसेस में एक सिंक होना ज़रूरी है. दोनों कंकरेंटली चल रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस कब यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, कौन सा प्रोसेस अपडेट करेगा इंफॉर्मेशन, उसके बाद कौन सा प्रोसेस उसको यूज़ करेगा. सो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन इन दैट एग्जीक्यूशंस. So for that, we need to have process synchronization. So process synchronization is what? It basically refers to the idea that multiple processes are to join up or handshake at a certain point in order to reach an agreement or commit to a certain sequence of actions. So this is what a process synchronization is. So when multiple processes execute concurrently, sharing system resources, then inconsistent results might be produced. So process synchronization is a mechanism that deals with the synchronization of processes. It controls the execution of processes running concurrently to ensure that consistent results are produced. ऐसा नहीं होना चाहिए एक प्रोसेस है उसने एक पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट किया है, दूसरा भी उसी डेटा पे काम करके कुछ और रिजल्ट जनरेट कर रहा है. सो कन्फ्लिक्शंस नहीं होनी चाहिए जो भी आउटपुट आ रही है. दे शुड वेल इन सिंक, सिंक्रोनाइजेशन में काम करें, कंकरेंटली करें, सो दैट हमारे पास जो एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर क्वाइट कंसिस्टेंट. Now, what is actually the need of synchronization? Why we need to have synchronization? The process synchronization basically is required because when multiple processes execute concurrently, they sharing some system resources, maybe memory, maybe input output devices. So the resources can be any. So they have to work under a sync कि अभी एक ही टर्न है, then with some mechanism किसको हमने कौन सा रिसोर्स देना है. सो हमें एक सिंक में लेके आना होता है प्रोसेसेस को, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्लिक्शन, देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसी while we are operating, and also to avoid the inconsistent results we need to have process synchronization.
Next, we are having a concept of daemon. So what actually the concept of daemon says? So daemon is a process. Basically, it is a system process which is created at boot time and keeps executing in the background. लेट्स से जब भी आपका सिस्टम ऑन हुआ है, आपने एक प्रोग्राम जो है उसको एक पर्टिकुलर टास्क साइन कर दी है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये इसको इस तरह से रिजॉल्व करेगा. सो जब भी आपके पास वो वाली सिचुएशन आती है तो डेमन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, अपना काम करेंगे, देन अगेन दे विल गो टू बैकग्राउंड. सो दिस इज हाउ डेमन वर्क्स. हम स्टार्टिंग में जब सिस्टम बूट हो रहा है उसी टाइम ही डेमन्स जो हैं वो असाइन कर देते हैं, उनको क्रिएट कर देते हैं एंड और वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं बैकग्राउंड पे. कभी भी एक्टिवेट मोड में नहीं आएंगे. एक्टिव वो तभी होंगे जब वो वाली पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई है, जब उनको वो टास्क करना है. So a daemon is created to perform a specific task. When a request for perform the particular task is received, the concerned daemon automatically gets activated. After performing the assigned task, it again goes back to the background. So this is how daemons work. नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्टेक्स्ट स्विच. कॉन्टेक्स्ट स्विच हम ऑलरेडी CPU शेड्यूलिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो आई विल बी ग्लैड इफ एनी वन ऑफ यू जस्ट टेल मी अबाउट व्हाट एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट स्विच इज. विवेक. Yes, ma'am. यस बच्चे, कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विच, as we know that processes can execute concurrently or maybe in parallel when we are working into multi-programming or multi-processing scenarios. The CPU scheduler switch rapidly between processes to provide concurrent execution. CPU जो है उसको हम असाइन कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को टास्क परफॉर्म करने के लिए. हो सकता है कोई और प्रोसेस आ गया है एंड विद सर्टन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम सीपीयू किसी और को प्रोवाइड कर देते हैं. सो जब ये स्विचिंग होती है सीपीयू की प्रोसेसेस में, एक प्रोसेस से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज टर्म्ड एज योर कॉन्टैक्ट स्विच. This means that one process may only partially complete execution before another process is scheduled. So there is a cooperating process here. A cooperating process is one that can affect or be affected by other processes. So cooperating process या तो help करता है एक particular execution को complete करने के लिए, या impact उसका होता है maybe it is supporting some other process to fulfill its execution. So cooperating process can either directly share a logical address space or be allowed to share data only through file or messages. So switching the CPU to another process requires performing a state save of current process and the state restore of a different processes. So this task is known as context switch. जब भी CPU एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को असाइन किया जाएगा तो पहले प्रोसेस की जो स्टेट है, कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है, उसकी क्या स्टेट है, क्या पैरामीटर्स है, वो सब कहीं ना कहीं सेव होते हैं और उनको सेव करता है मैकेनिज्म विच इज टर्म्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विच. फिर दोबारा जब भी उसको दोबारा सीपीयू असाइन होगा उसी प्रोसेस को, तो उसको उसकी स्टेट चेक करते हुए उसको वहीं से ही दोबारा एग्जीक्यूट किया जाता है. सो दिस होल सिनेरियो, दिस होल टास्क इज ऑफ कॉन्टैक्ट स्विच. So we can say context switching refers to the process of transferring control of the CPU from the concurrently running process to another process from the ready queue. All right. So next we are having processes of concurrency.
sorry, principles of concurrency. So what actually are the principles of concurrency? एक सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, उसमें हम कंकरेंसी कैसे ला सकते हैं, किन प्रिंसिपल्स के थ्रू कंकरेंसी हमें मिल सकती है? द वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग. Multi-programming is what? When we are managing multiple processes within one process. हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे सिस्टम में एक ही प्रोसेसर है, उसी प्रोसेसर से हम मल्टीपल प्रोसेसेस को चला रहे हैं बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो इस तरह से हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिनेरियो, मल्टी प्रोसेसिंग सिनेरियो जनरेट कर पा रहे हैं जस्ट टू फुलफिल कंकरेंसी. हमें यूजर्स को ऐसे फील होता है कि हमारे सिस्टम में एक साथ ही बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, हम एडिटिंग भी कर पा रहे हैं, म्यूजिक भी सुन पा रहे हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर पा रहे हैं. सो कंकरेंटली हम बहुत सारे टास्क कर रहे हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. हमारा प्रोसेसर एक ही होता है पर स्टिल हम अलग अलग टास्क कर पा रहे हैं. So this is one principle of concurrency. The other one we are having is multiprocessing. Under multiprocessing, the management of multiple processes within a multiprocessor is done. Multiple processes होते हैं, multiple processes मिलके multiple processes को ही execute करते हैं. So multiprocessing सिनेरियो भी कंकरेंसी हमें प्रोवाइड करता है. हम एक ही साथ बहुत सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अनडाउटेडली देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स दोज आर वर्किंग इनटू दैट. देन वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. So distributed processing is what? It is the management of multiple processes executing on multiple distributed computer systems. सो हमारे पास मे बी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स हैं, बट दे वी आर हैविंग वेरियस मल्टीपल सिस्टम्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट लोकेशंस, और सब मिलके हमें अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करके दे रहे हैं यूजर्स को. सो दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग द मल्टीपल प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड computer system. So it is also ultimately providing us with concurrency. So these are the various fundamentals to all the areas and fundamentals to operating system designs in concurrency. So concurrency basically encompasses a host of design issues, including communication along processes, sharing of and competing for resources such as memory, files, input, output access. So synchronization of the activities of multiple processes and allocation of processors, time to time processes, that should be done here. So these are the principles for concurrency. Next, we are having critical section. So what is the actual meaning of critical section? जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, सो वी हैव मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस होते हैं जो compete करते हैं एक ही रिसोर्सेज के लिए. शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं. सो अब कौन से प्रोसेस को कब कौन सा रिसोर्स देना है और उससे क्या आउटपुट जनरेट होगी, और जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो फिर से वो रिजल्ट्स जो है वो दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ करेगा. सो दिस होल सिनेरियो इज ऑफ रेस कंडीशन. सो इसी को ही सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी क्रिटिकल सेक्शन. So critical section is a section of program where a process access the shared resources during its execution. Next we are having the concept of race conditions. So race conditions are what? In operating system, some processes share data for reading and writing.
All right. So then the result of operation depends on the order in which reading and writing takes place. This condition is called race condition. एक ही डेटा है, उसके लिए मल्टीपल प्रोसेसेस उसको रीड भी करना चाहते हैं और उसको मॉडिफाई भी करना चाहते हैं. सो लेट्स से अगर प्रोसेस वन ने उसको पहले रीड कर लिया और मॉडिफाई कर दिया, और उसके बाद सेकंड प्रोसेस ने जो मॉडिफाइड डेटा है उसको रीड करके फिर मॉडिफाई किया, देन ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. बट एक ही टाइम पे दोनों प्रोसेसेस ने एक ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया, रीड करके उनको मॉडिफाई किया, तो ऑब्वियसली उसमें कन्फ्लिक्शन आ जाएगी, जो एंड रिजल्ट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी जनरेट हो जाएंगे. सो कौन से प्रोसेस को किस सीक्वेंस में हमने चलाना है सो दैट हमारे रिजल्ट्स पे इफेक्ट ना पड़े, सो दैट होल सिचुएशन अकर्स इन रेस कंडीशन. So an unanticipated execution order of concurrent flows that results in undesired behavior, which is called a race condition. So race condition occurs when two or more threads can access shared data and they try to change it at the same time. Because the thread scheduling algorithm can swap between threads at any time, we don't know the order in which the threads will attempt to access the shared data. So therefore, the result of the change in data is dependent on the thread scheduling algorithm. That is, both threads are racing to access or change the data. Race condition basically results from runtime environment including operating system that must control the shared resources, especially through process scheduling. Moreover, race conditions are also possible in operating systems if the ready queue is implemented as a linked list, and if the ready queue is being manipulated during the handling of an interrupt, then interrupts must be disabled to prevent another interrupt before the first one completes. If interrupts are not disabled, then the linked list could become corrupted. So we can say race condition is a situation where the final output produced depend on the execution order of instructions of different processes, and several processes compete with each other. So we are having a few uh, examples based on race condition, and we will be discussing these examples in our next session. So in our next session we'll be discussing critical section example and race condition examples in detail. So if anyone is having any kind of doubt, as if now in today's session, may ask the questions.